investing activities. In the scope of financial management, we discussed that financial management is about arranging finances and then investing these funds. जब हम पैसा इकट्ठा करते हैं मुख्तलिफ सोर्सेस से, वी टॉक्ड अबाउट डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग, तो इस पैसे को अगला स्टेप ये है कि हमने इफेक्टिवली इन्वेस्ट करना है. When I say effective investment, it means that it has to be invested in a way that it gives us the required rate of return. The required rate of return again is a benchmark. It is, you can say, is the minimum level of return that we want to have, because on the other hand we have a certain cost of financing. हमने cost of financing के बारे में बात की थी, यानी जब हम पैसा फंड्स अरेंज कर रहे हैं तो उस फंड्स को अरेंज करते वक्त हमें उसके ऊपर कुछ रिटर्न पे करना है एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. हमारे लिए वो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है, ईदर इट इज़ एक्विटी कॉस्ट और इट इज़ कॉस्ट ऑफ डेट. अब हमें इस पैसे के ऊपर अर्न करना है इतना प्रॉफिट कि हम उस कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग को मीट कर सकें. And for that, we have to invest our funds in the most sagacious manner so that we are able to earn enough on them. Now, the investments that we make is the distribution of those funds in different assets. जब हम कोई बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ले लीजिए, जब उसे हम स्टार्ट करेंगे तो जाहिर है हम ज़मीन खरीदेंगे, we'll have some construction on that, some building, and we'll have some plant and machinery and equipment and vehicles. So the funds will be invested in these assets. But once we have got the plant and machinery ready, हमें इससे पैसा कमाने के लिए, इस प्लांट को चलाने के लिए मज़ीद पैसा इन्वेस्ट करना है. And that investment is in short term form, that is in current assets. यानी मशीन को चलाने के लिए बिजली का बिल देना है, which is a short term investment. हमें रॉ मटेरियल खरीदना है, which is a short term investment. हमें लेबर को, काम करने वाले लोगों को पैसा देना है, which is a short term investment. So हमारी investment, either it goes into long term, which are called capital assets. The term that we use, the technical term that we use for them is property, plant and equipment. It is not just three assets, but it is a combined term. यानी इससे मुराद वो तमाम फिक्स्ड एसेट्स हैं कि जो बिजनेस के ऑपरेशंस में यूज़ किए जाते हैं. यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि फिक्स्ड एसेट्स वो भी हो सकते हैं जो बिजनेस के अंदर ऑपरेशंस में यूज़ नहीं हो रहे, उन्हें हम नॉन ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं और वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में शामिल नहीं होते, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारी उनके अंदर भी होती है. जैसा कि इसकी एग्जांपल ली जाती है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी वो बिल्डिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो प्लांट और मशीनरी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तक हमारे इस्तेमाल में नहीं आई. दैट इज़ नॉन ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट. उसके अंदर हमें रिटर्न इन्वेस्ट करना होता है. नाउ व्हाट रिटर्न वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने कहा, द रिटर्न हैज़ टू बी मैच्ड with the cost of funds, with the cost of financing. अगर हमारी cost of financing कम है तो हम कम rate of return पर भी survive कर सकते हैं. Later on हम बात करेंगे break even points की, जहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे revenue और हमारी cost और हमारे profits कैसे एक दूसरे से match होते हैं. But required rate of return is that rate of return which we want to earn from the operations of our business. Other than our business, हमारे पास जो पैसा है, the prime objective is, पहले तो वो पैसा हमारे बिजनेस की कोर एक्टिविटी में इन्वेस्ट होना चाहिए. यानी अगर मैं टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहा हूँ तो टेक्सटाइल प्रोडक्शन के अंदर ये पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए जो मैंने अरेंज किया. बट इफ़ आई हैव गॉट सरप्लस फंड्स, इवन शॉर्ट टर्म फंड्स, तो कई दफ़ा ये पैसा हम लेंड कर देते हैं. यानी ये जो लेंडिंग है ये हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट है. ये वो लेंडिंग नहीं है जो लोगों से हमने ली है, बल्कि ये वो है जो हम किसी और को देकर उस पर रिटर्न हासिल कर रहे हैं. सिमिलरली
हम अपना पैसा कैपिटल मार्केट्स या अदर मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी मार्केट है जहां पर लोग डेट और इक्विटी सिक्योरिटीज को खरीदते और बेचते हैं. सो इफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज funds, surplus funds, then they can invest those funds in stock exchanges or in other markets like commodity markets or bullion markets. But this decision is to be made by the finance team, the finance manager, the department, that when and how much funds are to be invested in which type of investment.